हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ ट्रू रिपर्स। अभी टाइम हो चुका है 7:44। आँख में नींद आप लोग को ऑफकोर्स दिख रहा है। हम लोग अभी निकल रहे हैं फॉर एयरपोर्ट। हम लोग का फ्लाइट है टू दिल्ली फॉर VCLS कप टू स्प्लिट, सॉरी VCLS का लेने के लिए स्प्लिट टू। सो अब मिलते हैं रास्ते पे। एक बार फूट जाएगा। हाँ देखो पतले ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೋ? ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕಟ್ ಕರ್ ದೇನಾ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವರ್ ಟೀಮ್. ಫುಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? BLT ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? TR ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? TR ಬ್ರೋ, TR ಜೀತೆಗಾ ಬೈ, ಜೀತೆಗಾ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಲಗೇಜ್ ಗಿಗೇಜು ಒಬ್ಬಂದೇ ಇಷ್ಟ ಐತೆ. 6 ದಿವಸ ಫುಲ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. मैं स्टोरी बता रहा था कि मैं फ़्लाइट में उठा, मेरे को इतना नींद है, मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गया। मैं फ़्लाइट में गया, इंस्टेंटली सोया। सोने के बाद मेरे को सपना आया कि हम लोग लैंड कर चुके हैं फुल टीम। कहाँ पे लैंड किए वो नहीं दिखाया गया सपने में। एक होटल में है, सामने में समुंदर है, सामने में समुंदर है और उधर से सुनामी आए और हम लोग वहाँ से भाग रहे। ये हम लोग का स्टोरी था। और उसके बाद और एक फ़नी चीज़ है कि मैंने अपने टिकट पे ऐड किया था मील। तो मील आया, मेरे को उठाया, मैं मील लिया, सो गया। उसके बाद उठ के देखते हो मेरा मील एंटी खा रहा है। ये हुआ था ब्रो DM भाई, यस। तुम्हारे से बैटिंग शुरू, बॉलिंग बैटिंग सब शुरू। सब You wanna say something to the vlog? I don't know what to say, but I'm reading a good manga right now. आप लोगों ने अब तक वीडियो नहीं देखा ना? मतलब जो छोटे वाले आते हैं ना सनी, जो छोटे वाले आते हैं ना, छोटा पीछे जो बॉट आता है ना, उसको ऑफ से फ्लिक मारने का ट्राई करना, बहुत ही अच्छा है उसका। Dot a bad word in your language to a foreign teammate. Yeah, of course. Are you disturbed in any mood? और कौन सा किया है? नहीं बोल सकता वो। लाइड झूठ बोला है स्प्रे वेव करने के बाद. वही ये चीज़ मैं हमेशा करता हूँ, हमेशा। To teach practice for something else. बहुत बार। Congratulations once again. Hello. People who don't know, he is the winner of the giveaway we did for the fully sponsored trip. He's Sudarshan. Sudarshan, would you like to tell the fans about yourself, a little bit about yourself? My name is Sudarshan. I'm from Pune. Right now I'm 22 years old. 23 actually. The trip that was organized and the sponsorship that they did was amazing. It was very swift. There were no delays in anything. And yeah, I'm here. Let's have fun.
LF, give some message to fans for today's match, for vlog. Land fans, come to land and make sure to support us. Shout Devanjan in online fans, write Devanjan in chat. very good motivation. How will we tell people to wake up early? We are not ready. वही बोला Match late, so we sleep late. Match late, so we Sleep late. स्लीप टिल लेट होता है ना, इंग्लिश में जाएगा तो इंग्लिश में नहीं जाएगा, मैं इधर ही रहेगा. हिंदी में रहेगा. किस्मत अच्छा है हम लोग का, दिल्ली में जो टाइम पे आए ये टाइम पे बारिश हो रहा है. ब्रो इधर देखा और tomorrow it's full rain. हाँ, और मैंने पूछा है लोगों को कि बोलते हैं कि ये टाइम पे कभी होता नहीं है बारिश, किस्मत अच्छे से बारिश हो रहा है. हम लोग लैंड किए बैंगलोर से लेके आए बारिश इधर पे. I know. तो आप तीनों में से किसी ने रिडल सॉल्व करने का कोशिश किया जो पोस्ट किया मैंने? हाँ मैंने कोशिश किया बट मैं सॉल्व नहीं कर पाया. फिर भी ट्राई करो. एक सेकंड अगर रिडल देखने दे. Hidden folds, I make my mark. Silently waiting in light or dark. With a pulse of energy, I blind and fold. Disrupting movement, both young and old. What am I? वुमन हो सकता है. मैं सबसे पहले तो मेरे को इसका इंग्लिश नहीं समझा. Silently waiting in light or dark. With a pulse of energy, I bind and hold. Disrupting movement. अच्छा टाइप साइफर ट्रिप है तो किल जो अलार्म. साइफर ट्रिप है तो किल जो अलार्म मोड. साइफर हाँ, ट्रिप. देखा तेरे को तो इंग्लिश नहीं समझ रहा, तू कैसे गेस किया? अभी उसके बाद मैंने अच्छे से पढ़ा है ना, उसके बाद सब कुछ. मैंने टेक्नो को पूछा, टेक्नो बोला ये क्या रिडल है, मेरे को तो नहीं पता क्या है ये. मैं बोला प्रणय भाई ने किया है, सोच थोड़ा. मैं बोला तो फिर एक एक पढ़ने लगा लाइन, फिर वो उसने डिकोड किया. तो बोलता है पक्का डेडलॉक्स था ना, डेडलॉक्स था. मैंने बोला और क्या होता है? मैं बोला डेडलॉक क्या छुपता है क्या पे? तो बोलता है नहीं आई थिंक साइफर वायर है. तो फिर बोलता है हाँ साइफर वायर है. Guys, Gaurang will be sitting in our coach lot. So coach sir, Yes, today- please give a message to fans. गाइस प्लीज़ सपोर्ट अस. और आपको अश्योरिटी देता हूँ हम जीतने वाले हैं आज जीतने वाले हैं, परसों जीतने वाले हैं, और हम वी आर गोइंग टू टोक्यो. go through the wall, like we go up. Yeah, go up and go. Hustle the commotion, get ready for explosion, we rollin'. Pag-ibig mo lang talaga, pag-ibig mo lang talaga, panghabang buhay at puno ng kulay, pag-ibig mo lang talaga. This life a movie, I'm a motherfucking star like Clooney. From dusk till dawn, I'ma lose sleep. I ain't tryna live broke like you be. I've been coming for the bag, I do me. Will I get paid? Absolutely. Cause you better knew a boss like Takeoff. I ain't left all bad and bougie. Heard them talk, they barely knew me. I ain't let no stranger fool me. When I came in the game, y'all showing that fake love. I ain't look past your jewelry. Now this ride is foreign. Every whip I drive imported. Anybody know me, they know. For this king, know I'm dying for it. Site anchors are already there. Deathmaker's outlaw is also posted. But as of now, goalie. Retake might actually come into place, but what are the utils that they have? LF, he's got his gun, that's all he needs. Who's now forward as well? Deathmaker up on top of Yellow, catches another one, goes in for the spam out as well. Sayo catches this up, things on the map, lead coming through as Aju gets fun, and LF with the up.
Respond. They know that this is a full hit and 4 players are ready to respond. Fighting squad come in. Back and forth fight. We go 2-2 trade, but that's going to be again. He's able to finally catch one person. That's going to be a 2v1 fight over towards the backside. Deathmaker needs to jump into the fight and tries to get the trade. And the reload is in. Creating history of his own by getting a couple of his own frags. Moves forward. Techno gets Kohli out there in the kitchen. Oh my goodness, what a turn from Adrian King. Still wants to play it away, but Techno gets the pick with that triple P. True Rippers. Forget the first map. We are professionals, we are here to do the job. Okay? Until and unless we finish the job, it's not over. Right? Second map, clean mind, cool mind, we go, we play. Okay? Keep the mentality, fight like tigers, boys, like this. He's still gonna survive. The pop flash comes in, and that is Techno with the heroics along with RU. True Rippers are playing sublime as of now, as it's a triple peak and RU with the flawless confirmation. This is for sure going to Lots of True Rippers as Techno finds one. Adrian is going to answer back, and Techno and RU finds 2 more. Hele finds 1 more. He's got to concede that space now, but he still has got that operator. It's going to be the Rolling Thunder invested. Goes in for the paint shells as well, and the shot connects on to Kohli. How was he able to do that? It is mind-boggling, and Helef comes in for the save. Gets a 3K in the round. And Helef now finally moving all around the world. Techno gets 1, but he needs someone to bail him out as well. And Helef does the exact job. But Venka was able to get the Viper. 1 HP with the DK. He's sticking it. He's still sticking it. The peak on the perfect timing. Low HP. 33. Not a tap yet. Venka wants to go in for the fight as well. But does he have enough time? He's going to the question. He goes for the fake tap. Classic in the right hand. Does he have time? It's going to be another big question. And no is the answer. It's going to be a round of race. Here maybe with the Nightfall along with the Paranoia as 1v5 over on towards that side. And maybe they won't be able to get that defuse as RU. Going, sticking for the defuse with Disrupt. Oh. 1v1 situation. Disrupt is the only man standing. And oh my god! What a clutch by True Rippers! Disrupt and RU in a 2v5. The re-wrap of Disrupt over towards the heaven. Mind-blowing. First of all, congratulations, insane gameplay. This is tiger mentality, right? 1 map down. Now, the thing of a LAN tournament or a tournament is we build. So this is the base. We start, we win. Then we go next until we finish. Right? Today, insane job. Tomorrow we cannot be like, oh, we did an insane job, tomorrow we play complacent. Cannot, right? Tomorrow we build again, then again. So today, congrats everybody, brilliant job. Before going into the matchup against Realty, what was going in your mind? I just want to enjoy the game. Like, exactly, I was just vibing to my music. Then I said, guys, I don't care if you don't shoot. Don't think about shooting, just enjoy the game. As a team, like, I think we're pretty confident. We talked about it yesterday. We know that we're gonna win because I have faith in my team that regardless of what happens, we'll recover. And in the last round of split, it was a 2v3. What was going in your and Disrupt's mind like to win the round? So can you tell us some insights about it? I mean, like, the 2v5 thing, what do I say? Because in scrims, right, we often do 2v5s together, me and Disrupt. Yeah. So that thing is like normal for us. So for me, my goal is just to kill enough guys for him to finish. So my job was done. Immediately when Disrupt called, he'll go all the way. That's it. So immediately I thought, okay, that he has to stay alive because he's the winning. He's the winning condition. Then after that, basically we just talked a little bit. Done. We only said, I think, 3 things. I said, RU, I'm gonna smoke default, I'm gonna plant open, then I'll make my move. He said, okay, go, make your move. Then we didn't come after that. We just understand each other. We just understood what this guy is gonna do and what this guy can do on side. I understood, I just trusted him, he'll get at least 2. Then he trusted me that I close out the round. And any message to Revenant, our next matchup?
Just give us a good match, I guess. I'm confident enough that every single one of us either will frag out or will help out the team that will secure the grand final slot. That's how confident I am. Tomorrow will be the easiest game of your life, trust me. And I'm not joking. And there will be outside noise. There will be people. Two Reapers playing so perfect. This is the best team. They will go to Ascension. They will be our representative. All those things. Yes, maybe they are true. But when are we the best team? When we are doing that. When we are doing the things in the server properly, then we are the best team. If we cannot do the things, then we cannot be the best team. Right? Yeah, So what everybody is saying, focus on what we are going to do on the server tomorrow. Guys, remember, we keep doing what we have practiced. Not more, not less. If we want to do more, you cannot do more. Because we have not tried, we have not practiced. It will what we have done. And if we are doing less than what we have practiced, that means you are nervous, brother. That means you are not inside the game. We cannot let that happen. We gonna do what we have practiced. Simple as that. With the tiger mentality which we had today. This mentality I want from everyone till the tournament ends. Tomorrow try to be on time, everyone, including me. Okay, everyone. Everyone 1:30 by the law. Okay. We were there early. So why I'm saying, because tomorrow I don't want Sunny disrupt this guy, go alone. We are coming behind. We will go enter as a pack. Ulul gago, putang ina mo, pokinang ina mo. The way we played yesterday, we just have to replicate that. Nothing less, nothing more. Okay? If we play that, we win. Nobody can touch us. But we have to feel it when we are playing. Like together, talking together, initiating together, taking fights. If they fight, we also fight. We fight, but we are smart, we fight together. Like how we did this yesterday. How are you? You guys, everybody discussing. Okay? We are pro players, we are professionals. From number one pistol round, we have to be on point, wake up. Like yesterday, do it together, and then we book the cab and sleep. Right? Go boys. Feel it. बीच में आपने माउंट का कंट्रोल लिया है, Hele was quick. चलिए, Hele secures one, skills ने trade जरूर निकाला, but Deathmaker shuts down the player who is carrying this fight. लेकिन Sultan the approach was phenomenal, but नहीं हो रहा Deathmaker को trade trouble, ये आपने और थोड़ा जरूर था, but Deathmaker उनके पेंचल से एक pick and disrupt दो ट्रिगर करके secures one more. और लो भाई Hele ने तब तक काम तमाम कर दिया है. अब ट्रेड निकालना इंपॉर्टेंट था, बट Hele with the third frag. उसके बावजूद क्योंकि समय बचा नहीं है, बट ट्रू रिपोर्ट दे गुड टू प्ले रीटेक. एक और अच्छा फ्रैग डेथमेकर के पास, और इतनी देर में साइड पे एंट्री हो गई. टेक्नो विद अनदर फ्रैग. स्पाइक प्लांट करने का मौका ही नहीं दिया यहाँ पर रेवेनेंट को. और एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, बट आर यू ऑफ गार्ड पकड़े जाएंगे. टेक्नो ने अपना फ्रैग अच्छा निकाल दिया है. टेक्नो has to be very clutch, but gets nothing. Deathmaker के पास लेकिन अपना रॉकेट है. He could get done, but he does not. But Hele आ गए दूसरी तरफ से. दरवाजा खोला था बी साइड का. Gets those two frags, but needs a 3k2 win the round. DOS9 no, और ये नाइट फॉलो. पूरी टीम आ रही है. चार लोग फ्लैग पे, और एक फ्रैग भी नहीं मिला Hele को. टेक्नो does find one, but चलिए disrupt. Deathmaker साइड के अंदर तो पहुंच गए, लेकिन ज्यादा कुछ और कर नहीं पाए. Skill finds that frag. और साइड में अभी भी 3 खिलाड़ी हैं रेवेनेंट के लिए. परफेक्ट रीड, परफेक्ट शॉट, एक एक करके घुटने टेक रही है. फायदा मिलेगा नहीं है. SK Rossi gets the second, और
आखिरी प्लेयर बचे 43 HP. This is done right here, right now. Sultan with the final frag and Revenant with the first. They had more hunger in this map than us, boys. We are doing everything right tactically, but we are not shooting them back. What is happening? I just want everyone to take a deep breath. Yes. Stop shaking so bad. There are so much positive things that happened last map. Keep it up. Just shoot back. If they are coming, don't be pussy. They are very free when the cascade is there. They will think no one is coming. I want people to stand double, so triple top 14. I don't care. Kill the building. Will the odd way. Okay, they are only. Just spam the cascade. They can't plant. You know they can't plant. It's not the first time we're playing hardcore. They have the same shit what we have played before also. Nothing extra. We just do our thing. Just the A thing on the cascade. We need to kill the building. Simple as that. राजा की तरह बैठ. Perfect skills पे Rossi with a perfect trade. तीन बार लिंक की बनाई जरूर है लेकिन अभी भी यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल परफेक्ट आ रहे हैं पैराडॉक्स. Does the damage control लेकिन अभी डिस्टर्ब. takes one more down. सुल्तान एक और बार एक बार हम दो की स्थिति में फंस जाएंगे लेकिन डिस्टर्ब फिनिशिंग थिंग्स ऑफ. एक और बार एक क्लच सिनेरियो में टीम फंसती हुई. चोर की एक्सपेक्टेड रहेगा या नहीं डेथ मेकर जरूर दिखाई दे रही है आर्यू के पास और ये सुल्तान के शॉट इस बार लैंड होंगे नहीं. कंडीशन के लिए सुल्तान को भेजा गया था. ट्रू रिप्लस एक फ्लॉलेस राउंड की तरफ बढ़ते हुए. Important one for the side of Team True Records. अभी मोमेंटम ले रखा है लेफ्ट बैट नहीं कर रहे साइड के एंकर्स. ये बहुत क्विकली फ्लैंक होने वाले हैं. लेफ्ट still finds another flank. But it's not dead. Sultan perfect timing. क्योंकि है जरूर DOS9 shot. He knows someone is around. The timing is everything. टैप किया उसमें spam. Knows exactly where he has to be. Perfect headshot at True Records. Even though एक बहुत बड़ा जंप था. Good position, good shot. जरूरी फ्रैग मिला. Oh, the snap is also there. But Skills gets a double. Put in a 1v3. First frag found. Nanos available है लेकिन ये पूरा गन बैटल के ऊपर आता है. Gets another pick. और अब ये नानो स्वर्म जरूर मदद करेगा. Skills cannot stick it through. हाफ करके उठना चाहेंगे but 13 HP. परेशानी. पूरे पोस्ट को गेम के अंदर आरयू बरकरार रखते हुए. और अब यहाँ पर ये रिटेक शुरू होता हुआ. रॉसी मिसिंग a lot of his bullets. And Death Maker इस बार पनिश करेंगे. The recon is beautiful. Finds one but the trade is there. 4v3. Thrash के आने तक का इंतजार करना पड़ेगा. Still the round is on. एक और अल्टीमेट का इस्तेमाल. अच्छा फ्रैग आरयू का लेकिन सुल्तान turns around gets another frag. Hunter's Fury being used of no value. 2v2 समय सबसे बड़ा दुश्मन Revenant. एक और प्लेयर खोएगी. Skills put in a 1v1. Race against time. हाफ करना पड़ेगा और अलाउ नहीं किया जाएगा. True Records. Stucking in and DM close angle duel. He still survives. और survive करके निकलना चाहेंगे but he finds the frag on DOS9 and LF. Towards that yellow position, Rossi dashes in. David पीछे से टीम का सफाया. True Records. What a comeback in the round. 14-12 से सीरीज को जीता है. 9-12 से डाउन थे लेकिन हमें मैप नंबर 3 के दर्शन करवाएंगे. First of all, good job. Why? Two things. Number one, this is how a champion team plays. Number two, Techno and Aryu. Good job, brothers. Good job. Tournament is never easy. LAN is never easy. Yeah. It will be always like this. This is what it makes good. This is what is it. It is. Okay, guys, let's do it. Come on. Come on. LF already taking out one, but it's going to be Disrupt answering back as well. DOS9 wants to get something more. 30 HP on Deathmaker, and now Sultan comes in for the lurk. Catches all the people. They're going for a full push down as well, but Rossi with the more down is there. The raise is perfect along with Sultan on that Vandal. Disrupt gets one, but probably one is all he gets. 4 HP on Paradox. Fault 9 combination. There's going to be the aftershock being used from the other side, and Helep
misses out on the shots and Skill actually doubles up on it and Paradox saves the life. Like you said, the Paranoia fault line. Oh, beautiful recon. Techno gets one more only for DOS9 to trade him. Got a decent amount of utility. Rossi finds the first man. That's going to be the Rolling Thunder being invested. Skills finds the one with the Hunter's Fury and Sultan. This has gone down to the drain for True Rippers. Aryu gets one but does not matter as he's taken down by the Aftershock. Yes, he is. He's moving towards the stack. Oh my god! Couple of flashes for Disrupt to try and help the team out. There's gonna be a flood in jump in from the heaven. Sultan catches one, make it two. Paradox as well, he answers back. It's all down to Disrupt in 1v3. This man has been clutching for the past couple of rounds, but Diffuse being stuck and it does not matter. When you fight for that cup, we have to fight till we die, not like till our breath is there. Team who has more hunger will always win the championship. Winning 3-0, winning 3-2 is the same for me. Winning is winning. So it's okay that we have that courage to say we're gonna finish it 3-0 or maybe 3-1. But if things going south, we cannot just give up. We cannot. He said he cannot. We cannot just give up. But it sounds We went on 5 GG guys. I don't wanna play. Tomorrow we go, tomorrow we play. Doesn't matter what we do inside, okay? Doesn't matter the result. Of course, if we win, we'll be happy. If we lose, we'll be sad. But we have been together this long. We have practiced. We have stayed together. This is something we are creating a memory. So even if we lose, even if we win, make sure that we were a comrade inside the server. We were together. We didn't give up, and we were not questioning each other. If a round doesn't go our way and they did something better than us, let's not be shaky. Yeah, exactly. Very good point. Let's not be shaky. Like, very good point. Expect everything. They can get close, or we can be far, or they can get ahead of us. But don't be shaky in a round. We can still end it. Yeah, just think of the game as round by round. It's a Valorant. Yes. Everything can happen. Retake के अंदर disrupt shuts down one, Kohli with 2, but Helef replies back perfectly. Adrian King 20 HP, but Aryu was ready. और लो भाई स्पिन सिचुएशन के अंदर गलतियां होती है, but आर्यू ने बोला मुझसे नहीं होंगी. एक और राउंड और यूटिलिटी का डंप. It is going to be enough. A spam is all he needs. Gets connected and Deathmaker. एक और राउंड उनके पास. Perfect shot landed. Rage Dev right there, लेकिन this out to the perfect trade. Smale is not there. The 2-player detention is all they needed. लेकिन आराम से टाइम बाय कर दिया बोले जब तक आप आराम से आइए. क्या परफेक्ट पीकिंग है भाई. अपर की तरफ जा चुके लेकिन टेक्नो ने अपना काम करें. क्या सेफली बच पाएंगे वो? द आंसर इज यस. चलिए मैन एडवांटेज दिलाइए और अब रीटेक इस सिचुएशन के अंदर प्रॉब्लम यही आने वाली कि जो प्लेयर्स हैं उनसे आपको डुअल जीतने पड़ेंगे. हेलेफ गेट्स ट्राई टू गेट वन, Deathmaker 2, Deathmaker द थर्ड फ्रैग इट इज. वो आते हुए लिंक की तरफ से ऑफ गार्ड पकड़ा जाएगा. डिसरप्ट को एंड Deathmaker with the quadra. Players all around. Rider control छीना जाएगा. Nether King gets the big final double as well and Kohli takes down Helef. एक-एक करके swings, एक-एक करके frags है आपके पास. आप लॉकडाउन लगाने की कोशिश करेंगे तो कोहली से डील करना पड़ेगा. ट्री की तरफ स्टिक करते हुए प्रॉब्लम आ सकती है. And he gets both of them. Kohli shuts down Team True Rippers. And Velocity
उनके मैप पिक के ऊपर उन्हें हराती हुई। What a game it was! You guys tried, we lost. We lost individual fights and everything. Everybody tried their best. Chalo, now wake up. Everybody wake up now. Guys, wake up. High time. It's high time. We cannot lose against these teams. They're so bad. Trust me. I'm cocky. They're very bad. 3, 2, 1, By Venka. So fake. Yeah. It's a full-fledged fake. आपने टैप किया है, लेकिन उसके बावजूद टेक्नो ने ना सायो को एलिमिनेट किया है। ये सीलोंग वाला प्लेयर एलिमिनेट हुआ है। और that's a meat grinder. That's a big crossfire. टेक्नो और आर्यू ने मिलके, लेकिन वो है डेथ मेकर। He needs to fight a double, he does. और अभी भी इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो यूटिलिटी बची नहीं है जिसमें डिसरप्ट को एलिमिनेट किया गया है। एड्रियन किंग वॉक्स अप, स्नीक्स अप, क्लियर डेड। आर्यू स्प्रे ट्रांसफर नॉट द बेस्ट पॉसिबल वन, और अब टेक्नो उसका अंत भी करना पड़ेगा। पहला शॉट अच्छा है, वेंका पे ट्रांसफर 1v1, बट टेक्नो 1v1 शॉट थ्रू द वुड। राउंड नंबर 4 ऐसा नहीं है, और भाई उड़ते हुए वेंका को बाहर ही निकाल दिया। डेथमेकर इन द डार्क कवर, इंपॉर्टेंट रहेगा टू गेट अ फ्रैग इन हेलेफ। या भाई ये तो आपका स्वागत किया जाएगा। चलिए डेथमेकर बैक ऑनलाइन, पर एक प्लेयर आपने पीछे बॉन्ग पे भी छोड़ा हुआ है और सपोर्ट भी आ रहा है सीलिंग से। डेथमेकर फाइंड्स वन और डिसरप्ट। चलिए सपोर्ट कर दिया, स्मोक पुश करके हेलेफ ने भी एक और फ्रैग निकाल दिया। एंड द टाइमिंग इज जस्ट इम्पेकेबल ऑन कोहली। इससे पहले वेलोसिटी एंड उसके साथ साथ वेंका का अगर ड्रॉप डाउन होता है तो बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल जरूर हो सकता है। कोहली का वो काउंटर स्पीड वर्क्स आउट, वेंका गेट्स अ फ्रैग। इन सब के बीच में टेक्नो ने बी के ऊपर कहर डाल दिया है, लेकिन अभी भी इंतजार कर रहे हैं। क्या चीकी प्ले है टेक्नो का, उन्होंने बुला लिया पूरी टीम को। इस राउंड को यही समाप्त करा जा सकता है। ग्राफिटी वाला प्लेयर अपना डुअल जीतेगा जरूर, बट नॉट द सेकंड वन। एंड टेक्नो हैज टू बी क्लच। अ 3K फॉर द गाय। रोलिंग थंडर को कमिट किया गया है, बट टेक्नो ही इज फार अवे। होक्स टाइम का इस्तेमाल करके हाथ सेक करेंगे। द शॉट इट लैंड्स आउट फॉर टेक्नो। I was smiling. Doesn't matter. I know we win. Are you? He was enabling himself. He's going everywhere. This too. He's going everywhere. Everywhere he's roaming. It's his father's map. He's doing all these things. Techno with Omen, with the team, not dumb. With the team, he's entering in C. We lost that round because Techno made a mistake. Techno smoked garage. Should smoke CT. Yeah. Garage fight is easier to take when you swing. When Aryu was also garage. Yeah. So, apart from that, so good, flawless. They have no answers now. Just feel it, enable yourself. Guys, to be a champion team, we have to face all these things. The team who has more hunger and mental will always become a champion. Like this. This is a new True Reapers, by the way I'm talking. This map. Now we continue in the second map on a sunset. पैराडाइज का सेट प्ले खिलाड़ियों को बिल्कुल फ्लैश पॉइंट पर डालता हुआ टेक्नो फाइंड्स अ डबल। और एक और मैप, एक और फर्स्ट राउंड और एक और फर्स्ट ब्लड। टेक्नो के पास में डिसरप्ट ऑन द फ्लैंक, ही इज ऑन दैट। एक और ब्रैग उनके पास है, ट्रू रिपल। टैकल्स वर द बेटर साइड, बट अभी के लिए आर्यू फाइनली गेट्स द फर्स्ट कांटेक्ट, गेट्स द बैक एज वेल, बट वेंका टॉप एंगल एक्सपेक्टेड एंड डिसरप्ट की ऑपरेटर पास। अब फॉलो अप करते हुए प्लेयर्स आ रहे हैं। सायो ऑल्दो गेट्स डेल्ट विद बाय आर्यू। हेले फाइंड्स वन मोर, पीछे से आर्यू का सपोर्ट, 3K फॉर आर्यू एंड ट्रू रिपल। प्लेयर्स डाइव इन करना जरूर चाहते हैं साइड पे, लेकिन आर्यू फाइंड्स सायो येट अगेन। हेले परफेक्ट सपोर्ट, वन फ्रैग ईच। टेक्नो ऑन द बैक साइड, एक और ब्रेक उनके पास बस वेंका, बट दैट्स नॉट द केस। दैट मेकर फाइंड्स वन। डिसरप्ट का अच्छा ट्रेड, और शायद यही चीज रियलाइज करके ट्रू रिपल्स अकेले आना चाह रही थी। वेंका क्रेजी शॉट, डिसरप्ट dodges the rocket and connects the shot. What a round! What a way to finish this first half. कल आर्यू को अगर ये शॉट मिल जाता है सायो पे तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। खेल रहे हैं ये पहली डबल से बहुत अच्छा शॉट। एड्रियन किंग फाइंड्स द फर्स्ट डेथमेकर का ट्रेड। बैक एंड फोर्थ वी गो, विंगमैन से डिफ्यूज की कोशिश रहेगी, बट अब ट्रू रिपर्स साइड के अंदर डाइव करेंगे। द शॉट वन ऑफ दोस लैंड्स, और यहाँ पर विंगमैन के साथ डील करना चाह रहे थे, बट ही डज नॉट गेट इट डन। कोहली 15 seconds on the clock. Everyone is trying to get into the side. Kohli finds the frag on Deathmaker. Concuss बहुत ज़्यादा जब still a time. 10 seconds on the clock.
ticking in when Ender King finds the frag. उसके पीछे पीछे Ender King shuts everybody down and Velocity had made it happen. 2-10 से वापसी, 15-13 की मैच विक्ट्री और सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाते हुए Velocity Gaming. It's just I want to tell you one thing. This is a mid. This is a deep inside the tournament. I cannot tell you again, guys. Be confident. Be confident because it's first maps game. Now everybody is confident. Everybody is killing. It's just now we have to not let loose. Let's go, boys. No, nothing happened. This is tournament. Yes. This is the tournament. This is how we feel in tournament. Okay? Yes. Just embrace it. Just be strong. Just chest out and play. This is part of tournament. Doesn't matter. Now the pressure is on them. They have to finish the game. Okay? Let's go, boys. Come on. 3, 2, 1. Aryu gets one, gets a double. LF with the cleanup. True Rippers with the pistol. Disrupt already 2 players दिख चुके हैं and he's the only one with the ghost flight. Full shield, Disrupt with 2, Techno with 2 and Deathmaker. The cherry on top. win का is done और ये दूसरा round. Techno एक और frag gets a double. 2 Techno के पास मतलब राउंड को पूरा यहाँ पे डिलीवर करवा चुके हैं. Deathmaker finds the pick. LF with the cleanup. True Rippers with the 8th round on the board. और अब यहाँ पे सायो को चेक नहीं किया जाएगा. The win condition is there, but again the awareness to check him is still on point. Aryu with the pick and True Rippers making sure के numbers 4 बराबर ही रहे. और ये हवा में उड़ते हुए वेन का उन्हें शट डाउन करते हुए Disrupt gets 2, but Adrian King he's still fighting. Oh, he was. Techno with the final frag and True Rippers with the 4th map. Straight back to the game. Brilliant job. Whatever we did, we know our game plan. This is what we live for, okay? Now we have to feel. Everybody is shooting net. Insane job, okay, bro? Trust me, I've seen the KO, what you are doing. I'm in love, okay? What I told you outside about the calling, you did exactly the same and see, we finished the game. 12, how much the round? 12-6. Always. Yeah. Let's go, boys. Do it. Come on! This could be deadly, but Deathmaker opening मिल गई है. वेंका का अच्छा ट्रेड, बैक साइड Deathmaker finds the second and the third as well. पूरा हिट यहाँ पर रोक के रख दिया है. Even Disrupt gets another frag. और अकेले बचे Adrian King. But what? ये अपने आप को एलिमिनेट कर दिया था उस शो स्टॉपर से. Although VLT रीड कर लिया उन्होंने भी. और बैक साइड से Adrian King finds one. But LFRU good for one is Disrupt just better in that situation. Folks left all alone. Backside, immense pressure. खेलना चाहेंगे but ऐसा मिलेगा नहीं. But wait a minute, Deathmaker is done and LF2 Disrupt ये राउंड बचाना पड़ेगा और बचाएंगे भी. 7वां राउंड लगाएंगे भी. And True Rippers ये पॉसिबिलिटी है कि इवेंट्स में प्लेयर्स ऑलरेडी स्नीक अप कर सकता है. द बाकी गेट्स वन, ऑलमोस्ट द सेकंड पंप, बट बच गए. टेक्नो फाइंड्स दैट सेकंड फ्रैग, लेकिन बी मेन वाले प्लेयर से ज्यादा देर तक नहीं बचे. एलएफ बट इस समय पोजीशन छोड़ नहीं सकते. ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश, गेट्स वन एंड Disrupt shuts him down. Disrupt does not check, finally does and gets that headshot. 12th one on the board. Aryu one, but that's all he gets. But here's the hit, 34 seconds. LF still standing strong. One, Adrian King the trade, backside Kohli wins it out. Disrupt सारे एंगल चेक करने पड़ेंगे. And the paranoia connects. Will this shot connect? Yes, it does. Oh, he does. Disrupt shuts everyone down. He shuts down the hopes and Velocity too. Ladies and gentlemen, True Rippers, they are your second grand finalists of the Soman Maran Challenger South Asia. We are now in grand finals. क्या कहना चाहोगे ब्लॉग को? I mean, it was a tough game. They played. The Velocity ने बहुत अच्छा खेला. But True Rippers being True Rippers kept the calm and yeah, again another finals. ये सीजन तो True Rippers के बिना फाइनल होगा ही नहीं. So another finals. Hopefully this time सीन अलग रहेगा. Yes, हम लोग Revenant से हारे हैं. But हम लोग का प्रिपरेशन भी अभी है. अभी जाके और करेंगे.
and I think इस बार मतलब अलग होगा रेजल्ट टू रिपर्स के लिए. Let's go. Every event we have been in the grand finals. What would you like to say to the fans and the vlog? For the fans, thank you for supporting us first of all. Thank you for all the support. First of all, आपकी वजह से हम लोग ग्रैंड फाइनल आ पाते हैं पहली बार. First of all, thank you so much, guys. Especially the fans. I think the fans are having a heart attack right now. Even us. Even I was so scared. Fans तो भाई बहुत support करते हैं guys. Keep supporting us. As always, as usual, we will keep playing our best so that you can enjoy our show. And also to the guys who went bad with us, like who trash talked us that we're gonna lose. Here we are again. Grand finals. इस बार भी guys हम लोग अपना बेस्ट देंगे. जो भगवान ने लिखा होगा हम लोग तो खेलेंगे, हम लोग एंजॉय करेंगे. But I think इस बार we got it. Yes. I think इस बार we got it. This final will be different from the others. We are prepared mentally, right? We are prepared in game, and we are here to give our best. And I promise you, this final will be different. Something would be different. Yeah. Antidote playing. Wow. ऑफ कोर्स जैसे कि कप 1 में हारे, कप 2 में हारे, बट स्प्लिट 2 में होपफुली नहीं हारेंगे. बट हाँ, लाइक हम लोग आज जाके आज जो कल का मैच है, आज जाके हम लोग उसके बारे में बात करेंगे एंड जो होगा देखा जाएगा. कल अलग होगा. We are not coming second. Tomorrow we are going to win this. Let's go. So now, tomorrow, we're gonna change history. Second place, it's done in our options. We want to win, and we'll do whatever it takes to win. So let's go. Very good job for ending this tournament, ending this match by fighting. I like to win like this. Sometimes we will win like 3-0. Yeah, it's okay. You'll just have fun. You pick up the trophy and then you go back. No adrenaline. But if wins like this make us stronger individuals. Yeah, for sure. Very well done, boys. Everybody. Like, I didn't expect my team, how I have known you guys. I'll be brutal honest, okay? How I have known you guys as a competition, as an opponent for the past 1 year. For me, I was 95% sure that we will win. But that 5% came after sunset. That 10-2 and then we lost. I was confident, I trust, but there was time I was feeling like, will these guys come back from here? Will they have the mindset? Will they have the mentality? I am to saying, I am to trying. And they are playing. The mouse and keyboard and headphone are on their hands. What will they do? But you guys proved my 5% wrong as well. So, very well done on that as well. Now, don't keep saying, repeating things like, oh, we are always second. We are 2 reapers. I don't like all these things, to be honest. Even in joke, Sunny sometimes, you sometimes, everybody does. Yeah. Even in joke also, I don't like all this. And the same thing is with eco round. That हम लोग तो eco round ही हारते हैं. क्यों हारते हैं? उसका solution क्या है? Tomorrow we are playing the finals. I don't even care how many finals you have played, how many finals you have lost. I don't care because I was not there. Tomorrow, if we lose, I will also lose. And I don't want to lose. I don't like to lose. Okay? So tomorrow, we will win. डिटेक्शन मिलेगा नहीं. रनिंग शॉट फ्रॉम रेवेनेंट, एक एक करके
frags. Are you still backside? Gonna double to his name, but perfect there from Dos9. एक पिक्सल भी आउट ऑफ प्लेस होगा तो उन पे गोली लगाई। टू रिपर्स, दूसरे पर here comes the push और फंस गए पैरा। ये परेशानी है। The Guardian connect। Aryu opening duel जीत लिया है। Not just that, second, third, 3 for Aryu। Finally Sultan answers back, but already numbers advantage है और सुल्तान को लगा वो headshot लग गया है already। Through यहाँ पे 2 rippers and Wingman. He is being deadly and so is Deathmaker. 2 rippers. पहला फ्रैग निकाल दिया है, but looking the wrong way। LF 3 फ्रैग, एक नहीं दो नहीं पूरे 3, और अब सुल्तान के ऊपर पूरी की पूरी जिम्मेदारी। 13 राउंड तो समाप्त हो चुका है। परफेक्ट पोजीशन ऑफ यूटिलिटी, परफेक्ट पोजीशन ऑफ 2 रिपर प्लेयर्स, और क्या ही शॉट्स मारे हैं लेफ्ट इस राउंड में। Main shell comes in, disrupt, swings out, but again फर्क नहीं पड़ता। Sultan with the frag, Sultan make it a double। Revenant map point की तरफ बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ा रही है। But Sultan was trying to walk up, LF still finds one। पैरा का अच्छा ट्रेड। आर्यू क्या कुछ बड़ा कर सकते हैं, हेडशॉट जरूर है, और उसके बाद फ्रैग भी, लेकिन स्किल्स ने इतनी देर में वो पिक निकाल दिया। 1v3 इंडिविजुअल डुअल नहीं देना है, नहीं दिया जाएगा। रॉसी का फ्रैग, रेवेनेंट का राउंड, रेवेनेंट का मैच पॉइंट। दैट्स गुड टू, बट ये देखिए ये प्ले अच्छा हो सकता था डिसरप्ट। Dos9, oh the snake bite to buy even more time। Sultan swings, he finds a double to his name। Revenant केवल एक फ्रैग दूर इस पहले में आपको नाम करने। सुल्तान with the duel। Aryu, there is no time remaining on the clock। 3 seconds, get the frag, does not even matter because Revenant has done it। 7-1 down to the map victory for Team Revenant। और Bind का पहला मुकाबला अपने नाम करते हुए। We will not win the game if you are making this mistake. I'm not happy with the eco. I'm happy that it's our permanent ban. Still we are giving this scoreline and everything. I'm happy with that, but I'm not happy that we are losing ecos like this. It's frustrating. Boys, be men. Now it's all our maps. Every map is our map. We know how to play. We know how we practiced. Okay? Be with Nair. Lead how you are leading. Sagnik, you also lead how you are leading. Boys, step up. Everyone individually step up. Come on, boys. Come on. We are so better than them. We started so good. Now let's finish. रेवेनेंट कमाल करके जगह ऐसे शॉट लगाए। Dos9 किया जाएगा लॉन्ग के ऊपर प्लेयर्स। बैक साइड पे एक और पिक लेने का मौका। पैराडॉक्स, he finds the flag like a relay bolt। A sheriff in his hand, a dream in his head। He connects the shot as well and Dos9 the perfect frag। Deathmaker all alone on his own। स्पॉट आउट करा जाएगा उनको सुल्तान के द्वारा। एक 1v2, ये डार्क कवर हटेगा और इनकी आंखों से रोशनी भी हट सकती है। Skills shuts him down unaware and Revenant replies। एक किल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उठाया भी किसको है। पिछली बार भी पनिश करा था, इस बार भी कर सकते हैं। And Deathmaker is done। The round might be 2। Dos9 एक और डबल उनके पास, और ये एक और बात। Oh another one। सुल्तान के बारे में। Oh, he gets him but Para with the quadra। 6 on the board। बहुत क्रूशियल राउंड है और इसके अंदर ये जो गैम्बल है, बुलडॉग लेके अग्रेसिव डेथमेकर को प्लांट करना, ये वर्क नहीं करा क्योंकि वो गिर चुके हैं। ऊपर से अग्रेसिव प्लेस, स्किल्स, एक और फ्रैग है लेफ्ट के ऊपर। मैप गया, अगले मैप के अंदर तो प्रॉब्लम आएंगे। एसके रॉसी स्टीम रोल कर रही है रेवेनेंट, और ये देखिए पैराडॉक्स। या जस्ट बी केयरफुल। Early spam, Paradox takes down Deathmaker। A good frag। The reveal from Skills again, एक और एडवांटेज दिलाने में कामयाबी जरूर पाई जा सकती है। एक और अल्टीमेट ओवरड्राइव was correct। LF with a perfect trade। 1v1, Dos9 wins out the duel। LF ने एक और बार एडवांटेज कहीं ना कहीं नलीफाई किया जरूर है। Sultan got taken down। Dos9 needs to connect and he will। Okay, that was nasty। Revenant gets the second map and breaks the hope for True Rippers। Just reset, forget the map. Match is not over until it's over. Okay? What will happen? The worst case scenario, you will die and you will lose the tournament, lose the match. That's the worst case. Doesn't matter. Life doesn't end. But for that, we are playing. You want to play scared? No. I want to fight. If we win, if we lose, that's secondary. But I want to show blood in this game. Okay? Just show blood. One map. It's a best of one. Let's go. Enjoy the game, boys. Okay? Everybody is doing good. This game, not much takeaway. They just won their fight. They're f***ing lucky. This time, they won.
Okay? चल फायर पावर. I want fire power for everyone. I need your hand. লিড রাউন্ড যেরকম তুই তোর মতো খেল, কিন্তু কনফিডেন্টলি খেল, ফিল করে খেল. তোর উপরে কেউ নেই ভাই ইন্ডিয়ায়, কেউ নেই. মাই দিদি বলছি, আমিও ভয় পাই তোকে. খেল এবারে টিমটাকে তোল, ঠিক আছে? जो आपकी अप्रोच थी कि भाई एक बॉडी भी नहीं गंवानी, आप तो दो गंवा चुके हैं सुल्तान. टॉस इन पर ज्यादा फायदा नहीं हुआ. डेथ मेकर वापस से ढकेल दिया गया स्मोक के अंदर. कम्स आउट बट पैरा विंस डुएल. फीमेल से प्लेयर निकलेगा. 1 और 2 और सुल्तान सीधा साइड के अंदर. रॉसी वो पहला फ्रैग भी निकाल दिया है. एलएफ एटलीस्ट ही फाइंड्स द ट्रेड. अंडर हेवन के अंदर उन्हें डील कर लिया गया है. इन स्किल्स इन सब के बीच में एक फ्लैग निकालते हुए सुल्तान सिर्फ 6 HP हैं और डिसरप्ट इंस्टेंट शटडाउन आता हुआ. वो बार बार फेक करा जा रहा है पैराडॉक्स को बुलाते हुए क्लाउड बर्स्ट करके. क्लियर तो करना चाहते लेकिन हेल के अंदर एक प्लेयर एंड पैरा सिक्योर्स द राउंड. 7th ऑन बोर्ड. That is not the best possible weapon. The paranoia is good. Only one. The trades are better. Revenant, they're winning it out. सुल्तान टाइम बाय करते हुए. रॉसी वो ऑपरेटर वो काम करेगी टेक्नो के ऊपर. मूवमेंट अच्छा. आर यू गुड फॉर वन? बट दैट्स इट. रेवेनेंट रीटेक शानदार. बिना देखे एलिमिनेट कर दो, लेकिन पैरा ने कहा आप कर सकते हो तो मैं ज्यादा बेहतर. The young lad from Cruelburst Techno unable to step up. और अब देखिए रेवेनेंट किस तरीके से इस रीटेक को अप्रोच करती है. पैरानोया इज गुड. आइसोलेटेड डुएल, वन इट आउट. कैन पे कर दो, क्या रोक सकते हैं? जी नहीं. रॉसी 1 looking for the second one. Disrupt all alone. Gets 10 win. That's it. Revenant Esports एक बार पहुंचेंगे ग्रैंड फाइनल्स में. sorry guys, but all better. Sorry, sorry.